Now we will came to know how to find out the square root of a complex number when complex number is in the form of r e raised to iota theta. Now we want to find out the square root of 2 e raised to iota minus pi by 3. We will name this one as zk. We will add 2k pi in the argument. If we will add 2k pi in the argument, that is when k is equal to 0, we will add when k is equal to 0 minus pi by 3 plus 2k pi. When k is equal to 0, then pi by 3 plus 2y. The angle will move 360 degree clockwise and angle is at the same position. Okay, should I repeat? से ये समझ नहीं आया कि z क्या चीज है और 2k पाई क्या चीज। Z Z is the name of the complex number. Z is the complex number 2 e raised to iota minus pi by 3 is denoted by Z. As you know that we represent any complex number as Z. जो Z है अच्छा वो is the general name of the any complex number. Okay. If we will add 2k pi in the angle and we will suppose that k is equal to 0, 1, 2 up to so on. When we will put k is equal to 0, minus pi by 3 is this angle, minus pi by 3. When we will add 2k pi, 2 pi, k is equal to 0, when we will add 2 pi into this angle, the angle will be at the same position after adding 2 pi into this one. 2 pi is 360 degree. अच्छा अच्छा If we will ठीक है add 360 degree in minus 60, then it will be at the same position. Okay. ठीक है एंड से इसमें आप क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज गए आगे हम क्लॉकवाइज जाए वो एक ही चीज हो जाएगी। एक ही चीज हो जाएगी बट add we will add anti-clockwise movement. K is equal to 0, k is equal to 1, k is equal to 2. Now, when k is equal to 1, when we will put k is equal to 1, it will be 2 pi. When it is k is, दोबारा इसको मैं explain करता हूँ, एक मिनट जरा.
We will add 2k pi in the argument. That is, argument is minus pi over 3 plus 2k pi. Now we will put k is equal to 0, 1, 2 and 3 into this argument, and we will discuss the new argument. When we will put k is equal to 0, then the argument of z0 is minus pi by 3. So is there any difference between the argument of z0 or z? Argument of z is minus pi by 3 and वो जो argument of ओरिजिनल है ठीक है. z naught is minus pi by 3. Is there any difference? No. Now argument of z1, that is we will put k is equal to 1, pi by 3 plus 2 pi. Plus Pi by 3 minus pi by 3 is this angle. When we अच्छा will ये add किस तरह पता चलता है? minus pi by 3 is minus 60, and we will draw an अच्छा angle of minus 60 degree, that is clockwise. अच्छा तो फिर अगर हम इसी चीज को लेफ्ट पे बनाते तो वो क्या बन जाता है फिर? Left अच्छा पे वो ज्यादा हो जाए थर्ड in the क्वाड्रेंट in the में. third quadrant, then it will be greater than minus 90 degree. अच्छा तो हम स्टार्ट हमेशा इस लाइन से करते हैं, ये जो लाइन है. अच्छा Yes. ठीक This. है. Now when we will add 2 pi into this one, that is when we will add 360 degree anti-clockwise, it will be at the same इनसे position. सही इससे मैं क्लॉकवाइज क्यों नहीं कर सकता? बेटा जो इसका मेथड उन्होंने बताया हुआ है ना स्क्वायर रूट निकालने का, व्हेन द कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन द फॉर्म आर ई रेज टू अल्टा थीटा, उसमें इसी तरह 2k पाई ऐड करके किया हुआ है. यू कैन यूज माइनस पाई बाय 3 माइनस 2k पाई, तो फिर भी आपका सेम ही आंसर जाएंगे. बट वी विल यूज टू पॉजिटिव 2k पाई. We will add positive 2k pi in the argument. अच्छा तो सिर अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट से शुरू हो और फिर उधर से एंटी क्लॉकवाइज मूव करें तो How many वो degrees? पॉजिटिव हो जाता एंटी क्लॉकवाइज मूव करें तो ये इधर आ जाएगा. है, तो ये पॉजिटिव होता है. ये पॉजिटिव, पहले भी पॉजिटिव था, अब भी पॉजिटिव होगा. और अगर आप इसे क्लॉकवाइज मूव कराएं तो ये नेगेटिव से थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट से पहले गुजरता है, इसलिए नेगेटिव होगा ये. ये क्लॉकवाइज मूवमेंट हमेशा क्या होती है, उसको हम वी कंसिडर द क्लॉकवाइज मूवमेंट एज नेगेटिव मूवमेंट. ठीक है सी, आप ये लिख भी देंगे प्लीज तो मुझे याद रहे. ओके. If the write down, if the angle is measured anti-clockwise, then written positive. If the angle is measured clockwise, then it is written negative. मैंने लिख लिया. Now argument of z2 is equal to minus pi by 3 plus 4 pi. 4 pi means 2 pi 2 times. That is, ओके one rotation is this, the second rotation is this. So you can see that the ओके angle is again at the same point. There is no um, difference in the argument.
Okay. If we will add ओके 2k pi into any angle, it will remains the same. ओके Okay. इससे क्या मतलब? अगर हम किसी भी एंगल में 2k पाई ऐड कर दें, 2k पाई का मतलब क्या है? k को जीरो रखेंगे तो जीरो ऐड होगा. k, if we will put k is equal to 1, then we will add 2 pi into that angle. If we will put k is equal to 2, then we will add 4 pi into, that is 720. After a rotation of 720 or 360 degree, the angle will be again at the same place. क्योंकि एक सर्कल पूरा हो जाता है बेटा. जी. ठीक है जी सर, या. मैं हाँ समझ जी. गया। अच्छा ठीक है. The first step is we will add 2k pi in the argument. We will add 2k pi in the argument. The second step is that we want to find out the square root, so we will take power 1 by 2. Now the values of k we will suppose are 0 and 1. If we will put ओके k is equal to 0 or k is equal to 1, then we will get the two square roots. K0 is 2 e raised to iota minus pi by 3 power 1 by 2 is equal to 2 power 1 by 2 e raised to iota -5/6। minus pi over 6. This one is 1 square root. Z1 is equal to 2 e raised to iota minus pi by 3 plus 2 pi power 1 by 2 is equal to 2 power 1 by 2 माइनस e फाइव raised पाई ओवर थ्री minus 5 pi over 3 into 1 by 2. And the final answer is under root 2 e raised to iota minus 5 pi by 6. These are the two square roots. अच्छा, तो सिर्फ One ये जो आपने is this one and the second one is this one. Any सर question? तो जो आपने जी सर आपने जो राइट साइड पर वर्किंग की है वो करने की जरूरत तो नहीं है ना फिर? बिल्कुल नहीं है. वो हमें मैंने आपको समझाने के लिए किया है कि 2k pi, when we will add 2k pi into any angle, it will be at the same position all the time. ओके, तो हमने बेसिकली 0 और 1 हमेशा पुट करना है बस। To find out the square root, अगर यही क्यूब रूट हो ना तो यहां पर पावर 1/3 आ जाएगी इस जगह पे, और के हाँ में 0 1 2 बन जाएगा अगर क्यूब रूट है तो. ठीक है सर। With the help of this method, you can find out square roots, cube root, 4 root, 5 root, 6 root, any number of roots of the complex number. सर आप बस वो 2 और 1/3 और 2 पे ऐसे क्यूब रूट मार्क कर देंगे ताकि मतलब पता हो। Sorry. सर आप K0 1 फिर 2 जो आगे आपने लिखा था उसके आगे सिर्फ क्यूब रूट मार्क कर देंगे तो मुझे याद रहे कि ये अब क्यूब रूट मैं है। इसकी वीडियो आपको सेंड कर दूंगा. आपके सिलेबस में सिर्फ स्क्वायर रूट तक है. अच्छा सर स्क्वायर रूट तक है, फिर ठीक है सर।